class mein we had seen how to store the data of the course inside the table in this case. So let us run the project. CD, I think we have given Python project, Python manage.py, run server. Open the browser and run the application that we have created. It was like course master, I guess. Yes. तो यहाँ पे हमने we had added some course inside this. What are the things? Just we'll have a recall of the things that we have done. We first created a HTML form design in the templates folder, Python project. उसके अंदर we had created a application by student details. In that templates we have created a course master बोल के एक HTML page create किए थे. This was the HTML page. Then after HTML page, we had created the URLs में जाके we had created one urls.py for the course master, and then in the views.py we had created a save code for that, and then after that we had created a models.py where we are storing the information that we have taken from the user. उसके बाद again we created a one more HTML फाइल दैट इज कोर्स डिटेल्स जहाँ पे हम कोर्स का इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले करते हैं एंड देन अगेन वी क्रिएटेड अ urls.py के अंदर एक उसका एक पाथ क्रिएट किए थे दैट इज कोर्स डिटेल्स देन वी वेंट टू द views.py वी displayed the course we fetched all the data from the course master and we displayed that course data to the user in this case. So दोनों पेज को we can execute. So this is for the course master in this case. I will open the course details. So course details के अंदर we could see all the course of that particular data in this case. Now in the today's class what we will be doing is एक student का registration form create करते हैं. In that registration form whatever the course you have added those courses should be displayed in that HTML page. Because इससे पहले we created a course student details or using the select tag we had added the course directly in that. Instead of that, now I want these courses whichever has been added in the front end should be displayed inside the student registration form in this case. Okay, so उसके लिए एक student registration form create करना है and for student registration form I will take student name, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, आई नीड हिज पासवर्ड, एक पासवर्ड क्रिएट करता हूँ उसको एंड आई नीड द कोर्स नेम विच कोर्स ही इज स्टडिंग इन दिस केस एंड उसके बाद आई नीड अ वन मोर टेक्स्ट बॉक्स वेयर आई विल से कोर्स डिटेल कोर्स फीस एंटर करेगा एंड इफ आई वांट टू गिव एनी डिस्काउंट आई विल ऐड दैट फर्स्ट एक डिस्काउंट फील्ड देता हूँ वेर ही कैन बी अवेल्ड विद द डिस्काउंट इन दिस केस. उसके बाद उसको नीचे डाल देंगे, कीप इट बिलो इटसेल्फ. उसके बाद आई नीड वन नोट जस्ट टू टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा डेटा और एडिशनल डेटा if I want to have in this case. Okay, so this should be my HTML form design. So now for student name, which tag you'll use? Yes, type equal to text we will be using for the student name. For mobile number type equal to number and for password type equal to that is password and course name के लिए we use a select tag in this case because I want to give the only options which I have in my institute in this case. So I'll be giving the list of options in this. For course fees के लिए type equal to number in this case. For discount again type equal to number in this case. And for note we make use of the text area tag in this case.
Instead of text, we make use of text area because he can type the data in multiple lines in this case. So I need these fields for the student registration form in this case. Okay. So now let us have the first thing, HTML form design karna hai. So we will go to save the file HTML templates के अंदर I will say student registration dot html. Okay. So inside the student registration form HTML structure ले लो. Inside the structure I will say student registration and copy the link h3 student registration. I need the bootstrap classes का वो सब चाहिए, so I'll copy the links which I had earlier taken. Copy करो, उसके अंदर paste कर दो, and inside this start with the form design in this case. And इसके अंदर you can add one more, that is you can even take email ID. So that will be type equal to email. So we use a type equal to email for that, for the email ID in this. So let us start designing the HTML form for this. Say first thing is start with the form tag. Form tag के अंदर name is equal to FRM student registration. Method is equal to post. Autocomplete equal to off. Inside this start with the division tag in this case. So division class equal to container hyphen fluid. Then we have a one more division tag in that class equal to call high second will be for row. Inside this div class equal to call hyphen lg hyphen. Design कैसा करना चाहते हो that we have to decide first in this case. So while designing we have to see how many data that we are taking from the user. तो हम यहाँ पे total 8 fields we are taking in this case. 8 fields, what you can do is 7th वाला skip करे तो 8th वाला skip करे तो भी we have around 7 means I think 2 columns in one row would be fine in this case. Okay, so 2 columns means मतलब 4 rows it will be having in this case. So if you want 2 columns, it is called lg hyphen 6. Okay, 12 divided by 2, it will be 6 in this case. Then it will be call hyphen sm hyphen 12 call hyphen md hyphen उसको भी 6 दे दो. Okay, so medium device, 2 columns, 2 tags in one row. Even for LG it is 2 tags in one row. Then we have call sm 12 in this case. तीन ये तो 3 3 6 7 8 अच्छा नहीं दिखेगा. We will see. We'll take it as 4 and let us see the design in this case. Okay, now inside this label tag डालो. Label tag के अंदर make use of the font tag in this case. Font tag के अंदर star and color will be red. वो थोड़ा bright दिखना है इसलिए we keep it bold in this case. Bold हम text को भी लेना चाहते हैं. Whatever the text we have, I want that to be also in the bold. So whole thing will be in the bold tag. यहाँ पे the first one, that is student name. Use a input tag in this case. Input type is equal to text. Name is equal to student name. Then we have first tag है. So autofocus equal to on. Compulsory field है. So required. Use a placeholder. Enter student name. Then I have a placeholder in this case. A placeholder हो गया. Pattern property we use in this. Pattern के अंदर A to Z, capital A to capital Z. I need to allow space. I need to allow dot. Flower bracket के अंदर minimum 2 characters, maximum 100 characters in this case. Okay. Then we use a one more attribute, that is class. Class के अंदर form hyphen control. So this will be the HTML tag. एक काम करते हैं, we will create a path for this also, क्योंकि we will keep on seeing how the output looks in this case.
तो उसके लिए HTML पेज क्रिएट किए हैं. Go to urls.py, create a one more path. Path is student registration. Same copy paste कर दो तीनों जगह पे. Go to views.py, create a function for that. So it is def function name, उसके अंदर request colon एक msg वेरिएबल चाहिए हमारे को. We use that. Then it is return render open close request parameter comma dot html comma flower bracket के अंदर msg colon msg. Okay. So let us run this page and see how this looks in this case. Copy के open the browser. Localhost colon slash the application का नाम. I got the tag in this case. Next उसके बाजू में और एक tag आना चाहिए. That is I want to take the second data from the user, that is mobile number. तो go to student registration form. Same उसी को copy paste कर लो. Saves your time in this case. लेकिन replacement correct होना चाहिए सबका. So here it is. Mobile number. Then यहाँ पे it is change the name. Text चाहिए number. Autofocus is not required. Enter mobile number. Pattern property में things change here in this case. 0 से 9 तक allow करना है. That is 10, 10. I want to allow 10 digits only. बाकी का save करो, refresh करो, and it works fine. उसके बाद और एक field चाहिए. I need to take the student email ID in this case. तो copy the content, paste करो, start changing from first. That is email ID. Type is equal to email, name is equal to email ID. Enter email ID. Pattern property नहीं चाहिए. सेव करो. बाकी का yes, it is compulsory. सेव करो, refresh, you got the email ID in this case. उसके बाद the next we need to take the next field क्या है? We have the password in this case. फिर same thing, इसको copy करो, paste it, and when you are doing the copy paste, start in a order. बीच में change मत करो, because you will definitely miss any one of the fields in this case. So start with the label. First यहाँ से we change the label, that is password. Next line पे type is equal to password, name is equal to password, placeholder is equal to enter password, class same, save करो and refresh. So we got the password field also in this case. After password, I need the next field. Say next field चाहिए, that is course name. Now this is the point that we have to know in this case. Course name में first what I will do is, of course उसको copy paste करेंगे. Then I'll change the label. I'll say course joined. Instead of input type field, I make use of the select field in this case. Select field के अंदर name property, course join, compulsory field है, required, class equal to form hyphen select. Okay. Inside this, फिलहाल I will give only one thing, that is select course. And most important, जब आप select course दे रहे हो, the first one, value property should be empty, space भी नहीं देना है आपको. Okay, so it must be empty in this case. I'm not adding any courses inside this. पहले क्या किए थे, when we had done the registration form previously, we had added all the courses here only. Option tag डाल के I had listed all the courses in this case. Now I'm not going to do this. Save करो and refresh करो. You will get the tag in this case. And tag के अंदर when I click, no course is being displayed. क्योंकि the course names should come from the course master table in this.
Okay, तो कैसे करना है? Now we have to understand this part. Now for this, very simple, you have to go to the views.py. views.py में एक कोर्स का डेटा रिट्रीव करने के लिए you have to copy that inside a variable. So you can do the same line यहाँ पे to fetch all the course names. I write this. That is course data is equal to course master dot object dot all. So all the course names are displayed here. They are copied and they are put inside the course data. तो आप course data variable में what in this course data variable you can see all these information. Okay. Now this information of course इसमें थोड़ा use है थोड़ा use नहीं है जैसे I need only the course name in this case. Okay, और course ID चाहिए. These two fields I need in this case. So if you want to fetch only those two data, there is a procedure. नहीं सर मेरे को सब data चाहिए लेकिन I will use only course name and course fees. Yes, we will do that. हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये कोर्स में जो भी डेटा है आई नीड टू पास इट टू HTML पेज. कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, सेपरेटेड बाय कॉमा डबल कोटेशन में कोर्स डेटा कोलन कोर्स डेटा. So whatever the course data you have brought, you have sent it to the HTML page in this case. HTML page में भेजने के बाद then come to the student registration form. Most important यहाँ पे for loop के अंदर course का data को display करना. It is something like what you have done for the display code itself. If you remember, I'll just show you the course details. Templates में जाओ, open the course details. In the course details, you had written this code to display the course data in this. Okay, so we'll use the same method here. कैसे? Very simple. Inside this, for say cd in course data. Course data is a data which is a variable which is having all the course details in this case. तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ cd बोल के. इसके अंदर and for inside this I make use of the option tag. Option tag के अंदर I need to display the course name. So I'll use two flower brackets. cd dot वो कोर्स का वेरिएबल का नाम है कोर्स, मतलब मॉडल्स डॉट पी वाई में हमने दिया है कोर्स नेम. ओके, नेक्स्ट थिंग वैल्यू प्रॉपर्टी में कंपल्सरी इन द वैल्यू प्रॉपर्टी व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू से cd dot id. cd dot id मतलब कोर्स का आईडी इसके अंदर स्टोर होता है. कोर्स का नेम विल बी डिस्प्ले टू यू ऑन द select tag in this. So what happens if after writing these three lines? Very simple. जो पहले आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन जो खाली था, I refresh the page, click on this, the course name has been added. Of course वहाँ पे दो courses add हुए थे, so he is displaying C language two times in this case. उसके बाद we put a condition that repeat नहीं होना बोल के. Now see here, I go to course master, I will say Python, course fees 3,500, duration 2 months. Copy paste the things just to save the time. I've added the course details. Add बोल के course click किया, the course got added in this. यहाँ पे refresh करो, immediately you can see the Python language. Got this? I'll add one more language, say C++. Course fees 3,500, course duration 2 months, details डाल दिया, save किया, symbol is not allowed, so C++ बोल के देता हूँ. Then I will add, यहाँ पे refresh करो, the course get added. So हर बार I need not make the change in the HTML page. The one which you had done earlier, उसमें क्या होता था? Select tag में आप options add करना पड़ता था. You have to open the HTML page, you have to add the CPP या whatever the option you want, add करते थे. यहाँ पे add करने का जरूरत नहीं है. You put it here in this case, it is dynamically retrieved in this particular page. Just refresh करना है. So whatever the course you have added will be displayed in this. Same thing we can go with
Java course fees 4,500, course duration 3 months. Add kar do. And now you can see the data is getting added dynamically at this point. Say I want to add one more language in this case. COBOL COBOL course fees is 3,500, duration is 2 months, same concept, copy paste किया, add हुआ, refresh करो. In whichever order you have saved the data, it is displaying the data in the same order. Sir, नहीं sir, I want the data in the alphabetical order. ठीक है, बिकॉज जनरली व्हेन वी गिव द सेलेक्ट टैग में डेटा डिस्प्ले करते हैं वी वांट इट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन दिस केस. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे क्रिएट करना, वेरी सिंपल. आप डेटा जब फेच कर रहे हो व्हेन यू आर रिट्रीविंग द डेटा इन द views.py, यहाँ पे दैट इज इन दिस लाइन एक कंडीशन डाल दो और यू पुट वन फंक्शन कॉल्ड एज ऑर्डर अंडरस्कोर बाई. Order underscore by is something like retrieve the data in given order in this case. मैं क्या बोलता हूँ इसके अंदर कोर्स नेम के हिसाब से डेटा रिट्रीव करो. ऑर्डर बाय कोर्स नेम. सो व्हाट हैपेंस इज मॉडल में हमारा कोर्स नेम के हिसाब से रिट्रीव करने के लिए दिया हूँ. सो आई हैव गिवन द सेम नेम इन दिस. सेव करो and refresh the web page, and now you can see the data is in alphabetical order. So COBOL was last, अभी वो बीच में आ गया. Got this? Of course, this is very important that whenever you are retrieving any data, अगर आपको वो data कुछ order में चाहिए in the alphabetical order or the numerical order, अगर numerical order में चाहिए use the ID property. अल्फाबेटिकल या नेम के हिसाब से डेटा रिट्रीव करना ऑलवेज वी प्रेफर बाय द नेम इन दिस केस. सो ऑर्डर बाय बोल के एक फंक्शन है. यूज दिस फंक्शन एंड मेंशन बाय विच कॉलम द डेटा शुड बी अरेंज्ड एंड रिट्रीव. सो रिट्रीव हुआ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंड नाउ यू कैन सी द डेटा इज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्लियर विद दिस? उसके बाजू में विच एवर कोर्स आई सेलेक्ट, आई नीड अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर the course fees in this case. Course fees के अंदर डालना है. So I'll use a one more go to the design और एक row add कर लो, copy paste below. अभी ये नहीं चाहिए. I'll copy from the input type text. That will be a better option. Copy किया and paste it, and here I will say I want course fees. Type is equal to number, course fees, and यहाँ पे course fees. सेव करो, रिफ्रेश, यू गेट अ वन मोर कॉलम. यहाँ पे वो कोर्स सेलेक्ट करेगा, उसका जो फीस है ही विल एंटर द फीस इन दिस केस. नेक्स्ट आई नीड वन पासवर्ड फील्ड चाहिए. सो कॉपी द पासवर्ड इज ऑलरेडी गिवन. पासवर्ड दिए हैं. और कौन सा था, नोट था, नोट वाज दैट, उसको स्किप कर दो, स्किप दैट. आई नीड सबमिट कर फॉर्म चाहिए. ओके, सो सबमिट के लिए आई विल मेक यूज ऑफ बाहर चाहिए. सो डिवीजन, उसका एक सेपरेट डिवीजन रहेगा. इन दैट डिवीजन वी मेक यूज ऑफ क्लास इक्वल टू all hyphen 12 fixed whenever you are using input type submit. Center button में input type is equal to submit, name is btn submit, and the value is register, and value is register. Class लेंगे that is btn success. सेव करो एंड रिफ्रेश, यू गेट द रजिस्टर बटन. वो सबके बीच में गैप चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज वेर एवर कॉल lg4 जो है उसको रिप्लेस करके कॉल lg4 mp-2 मार्जिन बॉटम यूज कर रहा हूँ. रिप्लेस कॉल, सेव एंड रिफ्रेश. तो गैप्स अब आ गए. ओके, so that is a replacement for the form design in this case. Any doubt till here?
What we have done, we have dynamically added the course details in the register page. So this is how we have done this. ये सेम आपका जो डिस्प्ले कोड था कोर्स को डिस्प्ले करने का, उसी को थोड़ा चेंज करके I have kept it in this case. Any doubts in this? No? Okay. Abhi next most important thing is when we want to store the data in this case. Okay. When we type all the data, इसका एक model create करना है और model create करके we have to store. That is a one more place where we have to make the change. क्या change होगा? Say go for models. Models के अंदर class student registration data inside this models dot model open inside this. से हमारे पास क्या क्या fields है? First one is a student name in this. So student name is equal to models dot char field open close max length. Most important when we designed this page, हमने यहाँ पे name के लिए maximum characters we have given is 100. So make sure it is 100 here in this case. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. Okay. Next, after this second field I need is mobile number. So copy करो इसी को paste mobile number in this case. Mobile number का of course max we have given 10. I'll keep it 10 in this. उसके बाद we have taken email ID. So copy paste email ID. email ID के बाद then we have taken the password. उसी को एक कैर फील्ड डिक्लेयर करके पासवर्ड सेट कर दो बस. पासवर्ड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का रहता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं देना. सेव करो, नहीं तो डिफॉल्ट रखो 100 ही रखेंगे. ओके. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज कोर्स जॉइंड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. व्हेन इट कम्स टू कोर्स जॉइंड, एक्चुअली द कोर्स जॉइंड जब आप सेव करते हो इट विल नॉट सेव द कोर्स नेम इन दिस केस, बिकॉज हमने ऑप्शन टैग में क्या दिया है. In the option tag, if you can see, we have given the value property in this. Value property दिए बोले तो when you select the course name and click on the submit, उसका ID store होता है. Okay, you can see that यहाँ पे जो हमको course name दिखा रहा है. I'll open the view source page. Source page माने code का page रहता है. And scroll down, you can see languages है, उसका ID store हुआ है. So when you click on the submit button, uska ID will be sent to the save code in this case. Okay. And most important, say that is course ka ID रहता है. It is not the name in this case. Now listen to this very carefully. ये जो course ID store हो रहा है, this is actually ID belongs to the course master data. क्योंकि when we created a course master data वहीं से data retrieve कर रहे हैं. We are retrieving the data from here. Okay. Course master data ID column will be automatically generated for each course in this. Whenever you are storing the course, a ID will be generated in this. तो हमारे को यहाँ पे लिंक करना है that जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड डेटा में हमारा कोर्स आईडी जो है, दिस कोर्स आईडी बिलोंग्स टू द आईडी ऑफ द कोर्स मास्टर डेटा. मतलब एक मॉडल के अंदर जो एक क्लास के अंदर जो डेटा है वो दूसरे क्लास को बिलोंग करता है. ओके. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. इफ यू गो टू सम अदर कंट्री या दूसरे कंट्री से सम सिटीजन हैज कम टू योर कंट्री इन दिस, उसको क्या बोलोगे आप लोग? Somebody from another country has come to your country. What do you call them? Very good. We call them as a foreigners. Foreigners मतलब सिंपल वही है. सिटीजन, ही इज सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री इन दिस. एक कंट्री में सिटीजन है, वो दूसरा कंट्री को जा रहे हैं. यू पीपल गो टू सम अदर कंट्री, those people will call you as citizens in, foreigners in this case, because आप लोग वो कंट्री में फॉरेनर है because you are citizen of some other country in this. यहाँ पे भी सेम होता है.
The course ID is a primary key of the course master. Primary key मतलब citizen बोलता हूँ. It is a primary key of some other country, some other class, but the data is stored in some other class. मतलब उसका information यहाँ पे आ रहा है. We call them as a foreigner in this case. जो दूसरे country से हमारे country को आया या हम दूसरे country को गए तो we are called as foreigners in this. Same thing यहाँ पे the course ID is a foreigner because he is a primary key of the course master data. Have you understood this clearly, everyone? Okay. In such case, we make use of course ID is equal to यहाँ पे instead of taking it as a char field, we make use of something called as foreign key बोल के बोलते हैं उसको. We call it as a foreign key, foreigner in this case. Okay. अब ये वो कौन सा कंट्री का फॉरेनर है? If somebody comes to you and he says I am a foreigner, तो which country he belongs to? आप उसका country का नाम पूछोगे. The same thing in this case. When we told that course ID is a foreign key in this, तो कौन सा टेबल में वो primary key है? We have to mention the name of that table name in this, or we have to mention the name of that particular class. That is course master data. Got this point? No doubt in this. Okay. इसके बाद there are 3 compulsory fields that we have to use in this case. तीन है तो दो तो compulsory field है. The first field in this case is हम क्या करना है यहाँ पे on delete बोल के एक ऑप्शन आता है. On delete is a one more attribute in this case. Now why this on delete attribute is used? Very simple. अगर वो कोर्स यहां से डिलीट हो गया तो यहां पे उसको क्या करना चाहिए? से लेट अस अस्यूम सम वन पर्सन यहाँ पे क्या करता है, ही सेज दैट आई एम गोइंग टू यूएस को जा रहा हूँ बोल के बोलता है. ही इज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जा रहा है यूएस को. सो इन यूएस ही इज अ फॉरेनर इन दिस. अगर यहाँ पे उसको डेड बोल के डिक्लेयर कर दिए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एवरीवेयर वेर एवर हिज पासपोर्ट हैज बीन इशूड विल बी डिक्लेयर्ड एज डेड. अगर वो जिंदा है तो भी यहाँ पे डेड बोल के डिक्लेयर करता है. और दिस डेड है बोल के डिक्लेयर कर दिए तो इन यूएस ऑल्सो ही इज कंसिडर्ड टू बी डेड इन दिस. सीधा उसको अगर वो कहीं पे पासपोर्ट दिखाएगा तो फेक पासपोर्ट है बोल के उसको अरेस्ट कर देंगे. बहुत सारे पिक्चर में देखे हुए होंगे ऑलरेडी. देयर इज वन पिक्चर कॉल्ड वीर ज़ारा बोल के, वहाँ पे भी सेम होता है कि शाहरुख खान इंडिया से पाकिस्तान को गया था, वहाँ पे आते वक्त बस एक्सीडेंट हुआ बोल के इंडिया में उसको डेड बोल के डिक्लेयर करते. वहाँ पे वो पासपोर्ट जाके वापस आने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में जाता है तो वो बोलते हैं कि ये तो आदमी मर चुका है, पुट हिम इन द जेल इन दिस. बट दिस वैसा हुआ तो चलेगा? इज इट ओके? नो इन दिस केस. दैट्स द रीजन. अगर आई मीन कमिंग बैक टू दिस, अगर यहाँ पे वो कोर्स का जो भी आईडी है अगर इसके अंदर स्टोर हुआ है एंड इफ यू ट्राई टू डिलीट दैट कोर्स फ्रॉम द कोर्स मास्टर, दैट शुड नॉट बी डन इन दिस. सो फॉर दैट अगर नहीं करना है बोले तो वी यूज मॉडल्स डॉट प्रोटेक्ट बोल के आता है. वी मेक यूज ऑफ मॉडल्स डॉट प्रोटेक्ट. मतलब क्या होता है? मतलब whenever any course ID is stored inside the student registration data and if you try to delete that course from the course master, it will not allow you to delete in this case. Got this point? मतलब यहाँ पे वो मर चुका है बोल के डिक्लेयर हुआ तो भी they will not make that change in the visa office in this, क्योंकि वो वापस आना चाहिए. आने तक उसको हम डेड बोल के डिक्लेयर नहीं करेंगे. Got this? Okay. So for that we make use of on delete equal to model and dot protect. Understood this particular field clearly, everyone? Okay. Next we have a one more attribute in this case called as related name. Related underscore name. Related name is used
whenever we have multiple foreign keys in one table, एक क्लास के अंदर मल्टीपल फॉरेन कीज है, दो तीन फॉरेन कीज है, वी हैव टू गिव अ यूनिक नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम इन दिस केस. अब कुछ भी नाम दो, इट शुड बी यूनिक इन दिस. सो उसके लिए वी मेक यूज ऑफ द रिलेटेड नेम. ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी मल्टीपल कॉलम्स इन दिस केस, मल्टीपल फॉरेन कीज नहीं है. अगर मल्टीपल फॉरेन कीज आया तो वी हैव टू गिव another attribute called as related name, and you give whatever name you want. हम usually क्या करते हैं, we take the name of the class in this case. जैसे student registration data है, we say SRD and then the name of the column in this case, that is course ID, to keep it unique in this case. Okay, so we mention the short forms of the class name, and then we mention the name of that particular column, so that this column keeps unique values every time in this case. Understood the second attribute, that is related name in this case. The last attribute we have is the property called as null. Null, yeah, it's allow null is equal to, if we give it as allow null is equal to true, matlab this becomes a optional field. कंपल्सरी यूजर को कोर्स नेम देना जरूरी है बोल के नहीं है. ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स इन दिस केस हमारे फॉर्म डिजाइन जो किए, हम यहाँ पे सेलेक्टिंग द कोर्स नेम इज कंपल्सरी. लेकिन यू विल गेट अ फॉर्म डिजाइन जहां पे आप डेटा डायनेमिकली स्टोर कर रहे हो, बट the user can skip that particular value in this case. So skip ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ null value will be retrieved. So in such case, you want to store a null value, then you have to mention allow null is equal to true. For this, of course, we have made it compulsory, so I won't allow null in this case. तो इसको मैं निकाल देता हूँ. There is only one column in my table, so I'll use this. तो इतना तो minimum देना जरूरी है. Understood this point? No doubt in this. Now, whenever you have made any change in the models.py, आपको एक काम कंपलसरी करना पड़ता है, that is stop the execution, execute make migration, and click on this. Now he says create model student registration. Okay, and then of course migrate, and then run server. Because whenever we make any change in the models.py, I told you compulsory have to execute make migration and migrate in this case. Save karo, make migration, migrate, execute karo, and refresh. Of course, there is no error in this case. Understood two things in the today's class. That is, one is how to dynamically load the data inside the select tag, and how to create a model for this. Okay, especially a field called as foreign key model. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो फॉरेन की क्रिएट किए हैं, जो भी यहाँ पे क्लास का नाम दिए हैं, दिस क्लास नेम शुड बी अबव द एग्जिस्टिंग क्लास. इफ आई राइट इट ऊपर, इट विल थ्रो मी एन एरर इन दिस केस. एरर क्योंकि when he sees this line he says course master, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आया है he has never seen the course master, it will throw an error. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, whenever we are creating these master tables, पहले हम सब master tables को डाल देते हैं. We put all the master tables in the beginning in this. अभी this table is called as a dependent table because इसका data, that is course ID, वो course master के ऊपर dependent है. That is why course master data is called as a master table, whereas student registration data is a dependent table in this case. Clear with this? Any doubt in this case? No? Okay. अभी ये दो हो गया. Now the save code in this case. So go to views.py. यहाँ पे मेरे को when I click on the submit button, मेरे को data save होना है. Save होना में there is no much change, slight one change in this case. वो क्या change है that we will see. Of course, if request dot method double equal to post colon, इसके अंदर
वो स्टूडेंट जो मॉडल है मॉडल को कॉपी करो, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आई कॉल इट एज एस आर डी इज इक्वल टू मॉडल क्रिएट किए एस आर डी डॉट यहाँ पे कॉलम का नाम दैट इज स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके अंदर आपका HTML पेज में जो कोर्स का नाम दिए हैं and the column name the tag name that you have given that is student name, उसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। Then next after this I have srd dot second column name मेरे पास models में है। I'll first copy all these at a time। srd dot next चाहिए email id, next srd dot next चाहिए password, next srd dot course id most important। अभी ये फॉरेन की है so for that we say underscore id because यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं आईडी, तो कंपल्सरी यू शुड मेंशन दैट उसका आईडी प्रॉपर्टी अंडरस्कोर आईडी बोल के देना। सो वेन एवर यू आर यूजिंग दैट टू बी अ फॉरेन की इन दिस केस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, उसके अंदर मोबाइल नंबर, देन आई जस्ट कॉपी पेस्ट टू सेव द टाइम, then request dot it is email id, request dot password, request dot यहाँ पे हमने कोर्स को क्या नाम दिया था, we have to take the same that is course join। कॉपी करो एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद आई वांट टू सेव इट एस आर डी ओके फीस एक है ना, आई थिंक वी हैव वन मोर दैट इज फीस course fees is equal to it is a number in this case, so number है तो generally take it as float field in this, nothing inside this, default you can give 0, okay। And we have to change that also, अभी change किए हैं srd dot course fees equal to request dot post स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर and then srd dot save and then msg is equal to student registered successful। So same save code almost whatever you had written earlier in this case, सिर्फ यहाँ पे एक change है, वो change is when you are storing the foreign key attribute। जब आप foreign key attribute store कर रहे हैं compulsory it should be prefixed with underscore id in this case, underscore id उसके बाद जो भी data है वो data in this case, okay। Now since I have added one more column to the models.py that is course का, I'll just execute the make migration and migrate again। So make migration और एक column add हो गया, migrate हो गया and then we run the server in this case। अभी refresh will store the data in this case। So store करने के लिए ये नसरो मोबाइल नंबर 9876543210 say revan@gmail.com revan and course joined is say python java course fees is some 4500, click on register and we forgot to give the csrf underscore token, कोई नहीं बोला इसको, हाँ। So inside the form tag put this and when you enter that इसको refresh करने का जरूरत नहीं है, useless in this case, you have to create a new form in this case। Then revan Raven mobile number 9765432210 revan@gmail.com, password is revan, course joined is java, course fees is 4500, रजिस्टर क्लिक करो तो रेवन ही हैज गिवन इन स्मॉल लेटर्स, मेरे को डेटाबेस में उसको कैपिटल लेटर में स्टोर करना है। सो व्हेनेवर यू आर स्टोरिंग द डेटा यू हैव टू डू दैट कन्वर्शन, दैट इज ऑल द अपर फंक्शन।
So upper function will convert it into uppercase in this, and it will be stored in this case. Save karo. Now I click on register. क्या हुआ? Sorry, it is dot upper. Okay. अगर उसने नेम में स्पेस दिया हो तो कैन बी अ प्रॉब्लम. So for that, I make use of a one more function, that is trim. I had explained you, trim function is used to erase the blank space in the front or the end of the string in this case. So always जब भी आप कुछ भी input ले रहे हो, make sure you use the trim function. This save करो, refresh, and it will have यहाँ पे we have trim itself. Object does not have trim function. We have a trim function Python name. Let's check with that. Probably they have changed name. कुछ अलग दिया क्या? Strip. They have given the name as strip. Strip बोल के function है. Strip will erase. Trim is in PHP में है. So strip पेज वापस आ गया, मतलब the data is stored. Sir display नहीं हुआ. That is because we forgot to put the MSG on the top. MSG नहीं है यहाँ पे. So what we do? We use center tag. उसके अंदर H3 use करो या H4 use करो. H4 use करके two flower brackets MSG. I'll add a one more record in this case. Name, small names. Big complicated है. Sana is there. हाँ ऐसे नहीं. Sana is there. Two one two. ऐसे नहीं. At gmail.com. Next is Sana. Say course joined Python 3500. Register. It says display attached. Clear with this point? So this is how we perform the save operation in the foreign key concept in this case. The most important two things you have to remember is when you are storing the data here. Underscore ID is compulsory. If you don't give underscore ID, it will throw an error. Okay. Second important thing is when you are creating the models.py, वो कॉलम को फॉरेन की बोल के डिक्लेयर करना, कौन से टेबल में फॉरेन की है, एंड ऑन डिलीट ऑपरेशन इन दिस केस. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, whenever you are creating such things, जो डिपेंडेंट टेबल है, डिपेंडेंट टेबल शुड कम आफ्टर द मास्टर टेबल इन दिस केस. Understood this point? These are the three unique things that you should remember in this. Okay. Any doubts in this case? No? Okay. You can write down models.py बोल के लिखो.